Start something healthy Start something beautiful with your Sana. I think the Usana business is simple. It's not easy. It takes hard work. If you're willing to work hard, then you can get the result. But it comes from some simple ideals. One, this idea of belief in product. Second, belief in the company. Your belief comes from one thing. I believe it comes from one thing. It's trust. Trust builds belief. So when you're training people, you want to focus on three things: the mindset, then you want to build skills, and then set up a strategy on how you're going to do what you're going to do. A lot of people will start. आपके साथ बहुत लोग होंगे जो start करेंगे. Not everyone will finish a journey with you. Why? Not everyone has the same vision as you. यूसाना फैमिली का जो ये कल्चरल एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही यूनिक है और हम चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में आपको लेके जाएं और उनके फूड, उनके कल्चर को आपको वो एक्सपीरियंस दें. Hi, Dr. Karen. Good evening. Good morning. Great video. Wasn't that fabulous? So it was from our recent trip to Jaipur. All our brand partners had the best time over there in I Jaipur. see. Yes. So, good morning to you again. And so, for today's session, as I know you have planned a lot for all of us, so I would like to request just a moment. I would like to request all our brand partners to invite their team members so that they can also join and take benefits from this valuable session. So, I'll be speaking in Hindi and we will be doing the translation. So, whatever you will be speaking, I'll be translating. Okay. Yep.
या सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे आज के डॉक्टर कैरन के सेशंस के लिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जल्दी जल्दी अपने टीम मेंबर्स को ज्वाइन करा लीजिए। आप उन्हें एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, मिस कॉल्स ले लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि वो ज्वाइन कर ले सेशन में। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि सेशन हमें ऑलमोस्ट एक महीने के बाद डॉक्टर कैरन का सेशन मिल रहा है एंड वी हैव टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, फटाफट जल्दी जल्दी आप अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो take advantage of this training. And now, Dr. Karen, let's start. People will be joining in the meanwhile. We can start the session. Okay? Wonderful. Your screen. Thank you. Great to be with you again. Hello, everybody out there. Good evening in India and good morning over here in California. I love that video. It's the first time I've seen it. And doesn't it just make you so excited to be part of this Usana family? It's beautiful. Yes, Yes. absolutely. We just released that video actually. Oh, It was released today itself. yes. And the wonderful Michael Calais, he lives also over here in California. I work closely with Michael. I'm glad he was able to share with you. Yeah, he conducted 3 to 4 trainings over here, and they were amazing. We already Yes, love Michael. We would yes, like he's a you to great trainer. also visit India sometime. Yes, yes, that's for sure. And Yeah. look at how beautifully you celebrate life. It is wonderful. Thank you so much. So, Thank you. now today I'm going to take all of that excitement of being part of the Usana family and pretty much show you how to create product loyalty through lifestyle integration, because I do build my Usana business with the health message. Yes. Yeah, you can Oh, start. No problem. okay. I wasn't sure. Yeah. So to make it really simple, the 90-day habit, that's what I want you to start thinking in your mindset. You heard Michael Calais talk about mindset. Think in your mindset. This is a 90-day habit you want to do in your own life, and then you want to be sharing and celebrating with other people. So the ABCs: activate habits, build trust. You heard that word trust in that video, and create lifelong wellness customers. Absolutely. So, can you go back to that slide, please? Just the back one, where Which the one? topic is mentioned. Just the previous slide. Yeah. That's the slide. Which one do you see? Yeah, this one only. Okay. Mhm. No, the previous one. Just go back. Yeah, exactly. So, hi everyone. आज का जो सेशन है, आज के जो ट्रेनिंग का टॉपिक है, दैट इज द 90 डे हैबिट। टॉपिक का नाम है 90 डे हैबिट, जिसमें हम मेजरली फोकस करेंगे कि हम कैसे 90 डेज की हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 90 डेज इट टेक्स, 2 से 3 महीने का समय, 21 to 90 डेज बोला जाता है कि इट टेक्स 21 to 90 डेज टू मेक अ हैबिट। सो अगर हम कोई भी चीज़ को 21 to 90 डेज, लेट्स से अभी हम 90 डेज की बात कर रहे हैं, हम 90 डेज अगर कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो आदत बन जाती है, दैट कम्स नेचुरली टू यू, राइट। सो आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हम कैसे 90 डेज के अंदर ये हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट लॉयल्टी लेकर आ सकते हैं लोगों के लाइफस्टाइल में, आपके लाइफस्टाइल में और आपके टीममेट्स के लाइफस्टाइल में, एंड हाउ वी कैन डुप्लीकेट दिस सिस्टम, हम कैसे इस चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं। So this is today's topic by Dr. Karen, and we can go to the next slide. Yeah. Here, Dr. Karen starts with ABCs of the 90 days habit. मतलब जैसे हमारे अल्फाबेट्स की बात करें तो ABC बोल सकते बेसिक्स हैं। इसी तरीके से आज इस टॉपिक के अंदर जो बेसिक्स रहेंगे दैट इज ABC। ए का मतलब होगा एक्टिवेट हैबिट्स। आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को? हमें सबसे पहले अपनी हैबिट्स को एक्टिवेट करना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल में चीज़ें लेकर आनी होगी जो हम चाहते हैं डुप्लीकेट हो। सेकंड, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट के बारे में हमने वीडियो में भी बहुत अच्छे से सुना, ठीक है। जैसे डेविड ने बताया, ऑलरेडी ट्रस्ट के ऊपर बात करी, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। ट्रस्ट अपने ब्रांड के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, हमें वेलनेस
कस्टमर्स क्रिएट करने होंगे जो हमसे हमारे साथ लाइफ लॉन्ग काम करें। हमें लोगों को प्रोडक्ट लॉयल्टी देनी होगी, लॉयल्टी बिल्ड करनी है अगर, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अपने हैबिट्स में उसे लेकर आ रहे हैं, एंड व्हेन दे विल सी द रिजल्ट्स दे विल डेफिनेटली बिकम योर लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स। या Yes, lovely. Okay, and I always say you walk your talk. So here I am doing my little planks on a exercise ball, and I love this saying. Some of you know John Maxwell, dreams don't work unless you do. Isn't that just so, that's so powerful. So I post these kinds of things on my social media because we want to be the example. And this is the beautiful thing about USANA. We up level our own health as we share it with other people. It's one of the most powerful things you can do. Do you want me to pause there? I'll just translate this and then we Okay, can yeah. move forward. Okay. So that's a wonderful thing, by the way, Dr. Karen, as you mentioned that you share such post on your social media. That's amazing. So Dr. Karen बताती है कि walk the talk, the one you mentioned also. Walk the talk मतलब आप जो बोल रहे हैं आप वो पहले करें, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और वो ये भी बता रही है कि वो ऐसे पोस्ट अपने सोशल मीडिया पे शेयर करती है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कोट है, उन्होंने उनकी फोटो है जिसमें वो एक्सरसाइज कर रही हैं और उसके ऊपर उन्होंने कोट लिख करके शेयर किया है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। दैट्स पावरफुल, शी डज दैट, वो हमेशा करती है इस चीज़ को, उनका एक हैबिट बनी हुई है। सो यहाँ से आप समझेंगे कि पावर ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स की जो पावर होती है वो क्या होती है। यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। Yes. And this is the thing about habits, and this is what you want to share with your potential customers and brand partners is so interesting. 95% of daily choices become habits, not decisions. So we do this consistently over and over. It becomes a new way of life. And then that creates our results. Habits leads to consistency, which results. So the 90-day habit that I'm going to talk about helps customers see, feel, and live their results. वंडरफुल। सो द पावर ऑफ हैबिट्स में डॉक्टर कैरन बता रही हैं कि 95% हमारी जो डेली चॉइसेस होती है जो हम एवरीडे बेसिस पे करते हैं वो हमारे हैबिट्स बन जाते हैं, और वो डिसीजंस नहीं होते हैं बट वो हम इवेंचुअली रोज परफॉर्म करते हैं। आप वन फाइन डे उठ के बैठ के ये नहीं डिसाइड करते हो कि आज मुझे खाना खाना है, बट वी ईट एवरी डे, इट्स इन आवर लाइफ स्टाइल, हम ये रोज करते हैं, ये हमारी हैबिट बन चुकी है। सो जो हैबिट्स होती हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड होती हैं, और आपकी हैबिट्स भी कंसिस्टेंसी बिल्ड करती हैं, और जब ये कंसिस्टेंसी बिल्ड होती हैं तब आपको रिजल्ट्स मिलता है। अगर एक एग्जांपल लीजिए कि आपने जिम जाना स्टार्ट किया, पहले दिन आपको शायद कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे, आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर कंसिस्टेंटली वो रूटीन फॉलो करता है तो आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। सो ये 90 डे हैबिट जो रहेगी, ये आपके कस्टमर को हेल्प करेगी देखने में, फील करने में, और उनको वो रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने में। Yes. See, I understand exactly what you're saying. वंडरफुल। And just so you know as well, it's a scientific backed fact that this timeline for behavior change, if you can keep something going for 90 days, then it will become a habit. And it gives enough time for physical transformation to see something different. And of course, the feeling, how good you feel with that transformation. And of course, it builds belief in themselves, in ourselves, like, yes, I can really do this. And then, of course, in the products, because today I'm going to link how to tie the products into the 90-day plan. यस। सो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 90 डेज ही क्यों, हमने 90 डेज का समय क्यों चूज किया। 90 डेज ये साइंटिफिकली बैक्ड है ये टाइमलाइन, कि आपको इतना समय लगता है बिहेवियर चेंज करने के लिए। सो कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप उसे कंसिस्टेंटली अपने आप को पुश करके रोज उठ करके आप वो परफॉर्म कर रहे हैं 90 डेज में, तो आफ्टर 90 डेज यू विल नोटिस कि वो आपसे नेचुरली होने लगेगा, आपको उसके लिए अलग से एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका ब्रेन शिफ्ट हो जाता है, माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है इन द स्पेसिफिक टाइमलाइन, इसलिए हमने 90 डेज चूज किया। दूसरी चीज़, इनफ टाइम है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लगभग 3 महीने हो जाते हैं। सो 3 मंथ्स 90 डेज इज अ सफिशिएंट टाइमलाइन जहाँ पे आप फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं और उसके साथ साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड होगा आपके माइंड में।
एंड एट लास्ट ये एक ऐसा टाइमलाइन है जिसमें आप बहुत इजीली बिलीफ बिल्ड कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं और आपको उससे रिजल्ट आने लगता है तो आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है। और उसी तरीके से ये बिलीफ आप अपने अंदर तो महसूस करेंगे करेंगे, उसके साथ साथ आप हमारे प्रोडक्ट्स में भी वो प्रोडक्ट्स भी बिलीफ बिल्ड करने में हेल्प करेंगे आपकी। सो इसलिए 90 days इज अ सफिशिएंट टाइमलाइन, इट्स अ साइंस back timeline for behavior change, and that's what we are focusing on. Yes. I love all the thumbs up and the hearts. I see it. So people are connecting and getting it. I love that. So Yes. I love this. A lot of times when I talk to people interested in doing a program, they use the word trying. So this is another mindset that you can help people move away from just trying to really thriving. And the important thing is customers don't want another product thrown at them. They want a lifestyle shift. So this is a very important fact in how building your business. You want to show how the Usana products fit naturally into their day. So you can see this picture here. So if you remember the last time I was with you, I talked about the 5-day reset, the 5-day jumpstart. And I hope some of you have already done that and implemented it. I'm going to kind of briefly go over that again today because that's how I start my 90-day plan. And I asked, this is a customer that was doing my 5 days, and I asked them to post what they're eating on the WhatsApp group every day. So here's their shake, the Usana Nutrimeal, and here are all of their snacks for the day, because we teach them about low glycemic snacks. And you would do the core essentials, this is our supplements, and the probiotic. I get them to also put a picture of the Usana products they're going to be using that day. They post it in the WhatsApp group and everybody sees it. So we're building this belief around a lifestyle, not just a product. Wonderful. Also, I believe, Dr. Karen, the one you mentioned that the headline is amazing, from trying to thriving. I personally believe when we say something, it actually comes out to us. We are more like manifesting certain things. So, in the same way, when we are saying ट्राइंग, जब हम बोलते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं कोई चीज़ को, तो आपका ब्रेन उस तरीके से उसे पिकअप कर रहा है कि आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उस चीज़ का, आप उसे लाइफस्टाइल में नहीं लेकर आना चाहते। बट जब आप बोल रहे हो थ्राइविंग, आई एम थ्राइविंग डूइंग दिस, या मैं लाइफस्टाइल शिफ्ट करने में बहुत थ्राइव कर रहा हूँ, सो इट्स थ्राइविंग। जब आप ये टर्म शिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका ब्रेन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, वो ट्राइंग को छोड़ करके थ्राइविंग की तरफ जा रहा है, एंड इट्स अमेजिंग। So this is one of the most lovely thing that you shared. I personally liked it a lot. It's beautiful. And coming to the slide, so again, जैसे डॉक्टर कैरन बोल रहे हैं कि माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए हम जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, पर हमें अपने वर्ड्स को भी चेंज करना चाहिए। तो आप ट्राइंग को छोड़ करके थ्राइविंग बोल सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंग टू थ्राइविंग हमें शिफ्ट करना होगा। इससे होगा ये कि हमारे जो कस्टमर्स है, जो आपके आसपास जो कस्टमर्स है, वो उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। उन्हें एक लाइफस्टाइल शिफ्ट चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें उनके लाइफस्टाइल में इजीली अडेप्ट हो सके और जिसके साथ वो विजिबल रिजल्ट्स देख सके। एंड वहीं पे डॉक्टर कैरन अपने साथ एक फोटो भी शेयर कर रही हैं उनके क्लाइंट की, जिन्होंने उनका 5 डे डिटॉक्स प्लान लिया था लास्ट टाइम। और उसमें जब हमने उनसे पूछा था कि तुम क्या अपने लाइफस्टाइल में क्या कंज्यूम कर रहे हो, तो उन्होंने ये पिक्चर शेयर करी थी जिसमें न्यूट्री मील है, उसके साथ हमारे कोर एसेंशियल और बाकी सप्लीमेंट्स है, और उसके साथ उनकी कुछ स्नैक्स है जो वो कंज्यूम कर रही है। सो दिस इज ये है जो डॉक्टर कैरन बता रही है कि लाइफस्टाइल शिफ्ट हमें विजिबली दिखाना ज़रूरी है। सो आप ये चीज़ें करके दिखा सकते हो। जब ये फोटो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आई तो बहुत लोगों ने देखा, ठीक है, बहुत लोग देख रहे हैं, और इससे वो लाइफस्टाइल शिफ्ट होना ईजी होगा, क्योंकि दे आर इन दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन में है, वो अडेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, वो देख रहे हैं, और यहाँ से एक माइंडसेट शिफ्ट होना डेफिनेटली स्टार्ट होगा। Thank you. I understood everything you said. It's so beautiful, and I love that you resonated with thriving. Yeah. The word thriving, because that's who we are as a USANA family and what we want to share with the world. We want to help other people thrive. And it's not just
it's not just the products, it's the whole lifestyle. And people really appreciate that holistic approach. Makes us different as a company, I Yeah. think. Yes, Yeah. absolutely. Mhm. Yeah. So, and I'm going to keep sharing some photos from my experiences, what I do, my team, so that I keep reminding you how the personal connection is so important. So, building an emotional connection. People don't just stay for the ingredients. They might be, of course, they get asked questions about the ingredients, but they stay because how they feel. And this is a beautiful lady that started my 5 days many years ago to reset her life. She was going through a lot of struggles in her life, and she did the jump start to help her. This was her self-care. And she transformed, as you can see, she transformed her body, but more than that, she transformed her life. She joined as a brand partner. She now shares this amazing message of how she feels in the world with other people. And it's just been a beautiful experience to see people transform their lives and thrive. Absolutely. So now we talk about building emotional connection. अब हम emotional connection build करने की बात कर रहे हैं. So उसमें डॉक्टर कैरन आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उनके साथ एक लेडी ने काफ़ी साल पहले ज्वाइन किया था 5 डे रीसेट क्लेंस जो डॉक्टर कैरन ने लास्ट टाइम हमारे साथ शेयर किया था उसके ऊपर. सो बिकॉज वो बहुत अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस से बहुत सारे प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रही थी. तो उन्होंने ये 5 डे क्लेंस ज्वाइन किया अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. एंड आज इतने सालों बाद आप देख सकते हैं जो विजिबल चेंज आप फोटो में देख पा रहे हैं. उनकी बॉडी तो ऑब्वियसली चेंज हुई है, बट उसके साथ साथ उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. उन्होंने एज अ ब्रांड पार्टनर ज्वाइन किया और आज वो युसाना को प्रमोट कर रही है, वो युसाना को शेयर कर रही है और लोगों के साथ, और लोगों के लाइफ में उसे लेकर आ रही है. एंड शी इज़ ऑल्सो थ्राइविंग एंड शी इज़ मेकिंग श्योर कि वो और लोगों की लाइफ में वो एक्सपीरियंस लेकर आ सके. सो ये कुछ रियल स्टोरीज हैं, कुछ टेस्टिमोनीज हैं जो हम भी आपके ब्रांड पार्टनर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. आप उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी स्टोरीज लेकर के आगे और लोगों को शेयर कर सकते हैं और इससे आप एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने साथ, अपने लोगों के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ जिन्हें आप यूसाना अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं या यूसाना प्रोडक्ट्स शेयर कर रहे हैं. Yay. And I am going to be sharing more of those transformations as well as tell you the nitty gritty. So here's what I want you to think in your how you phrase the 90-day program. Break it into three phases. The first phase I spoke about on our last call together, which is days 1 to 5. This is a jump start. This is where they discover who we are, what the products can do, how they can feel. That's excitement. That's 5 days. Then you move into phase 2, which is basically 6 to 28, the first month. And this is when we start to reinforce the habits and they get more deeper results. And then you move to months 2 and 3, where it's habit mastery. Now, these are words you actually use with your clients to explain the 90-day system. So they, in their mind, have that as a mindset. If you just talk about the 5 days, that's all you're going to get, and then they'll disappear. You really want to talk about this 90-day transformation to thriving, that habit mastery, and the 3 phases. And it's really helped me with my clients have them commit to 90 days. And then eventually, of course, like my previous Peggy, she became a brand advocate. She became a brand partner. Not everybody will, but many will because they feel so good. यस, वंडरफुल. सो फर्स्टली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो वर्ड्स डॉक्टर कैरन यूज़ कर रही है हम ये भी वर्ड्स अपनी मीटिंग्स में अपने लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं. दे जस्ट साउंड्स बेटर. एंड ऑल्सो आप जिस लेवल का अपने बिजनेस को बताना चाहते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को, अपने अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकते हैं यूजिंग दीज वर्ड्स. सो नाउ इन दिस स्लाइड
कोचिंग द 90 डे जर्नी जो स्लाइड है जिसमें आप डॉक्टर कैरन ये बता रहे हैं कि आप अपने लोगों को, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको आप बताना चाह रहे हैं उसाना के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, जब आप पिच कर रहे हैं बेसिकली, उस टाइम पे आप इन 90 डेज को 3 फेसेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को भी इसी तरीके से अप्रोच करें, इसी तरीके से आप उन्हें ये फेस समझाएं कि ये 90 डेज 3 फेस होते हैं, जिसमें फेस 1 में डेज 1 to 5, जिसमें आप उन्हें 5 टेक लेंस बता सकते हैं, जिसमें वो जंप स्टार्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करेंगे, प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे, और वो 5 दिन की एक्साइटमेंट रहेगी बेसिकली। बट जो फेस 2 रहेगा वो डे 6 to 28 बीच में रहेगा, जिसमें उन्हें विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। और ये वो दिन रहेंगे जहाँ पे वो अपने आप को पुश करेंगे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के लिए, और उन्हें जब वो फिजिकल एफर्ट्स पुट करने होंगे तो दैट विल मेक अ माइंड शिफ्ट, वो माइंड शिफ्ट भी करेगा। इसके साथ साथ जब फेस 3 आता है, फेस 3 इज फॉर 2 to 3 मंथ, सेकेंड मंथ और जो थर्ड मंथ रहेगा वो फेस 3 रहेगा, जिसमें वो अपनी हैबिट को जो उन्होंने फेस 2 में बिल्ड करी, डे 6 to 8 में 28 में जो उन्होंने हैबिट बिल्ड करी, उसे वो मास्टर करेंगे। और जैसे पहले पिछली स्लाइड में डॉक्टर कैरन ने अपनी एक ब्रांड पार्टनर का एग्जांपल दिया, पेगी का। सो उसी तरीके से आप भी नोटिस करेंगे कि आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो 6 to 28 डेज कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फेस 3 में आते हैं, मंथ 2-3 में अपनी हैबिट को मास्टर कर रहे हैं, वो भी आगे ब्रांड पार्टनर बन सकते हैं, और वो फिर आगे ब्रांड को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से आप अपने ब्रांड की लॉयल्टी भी बिल्ड कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को ये पूरा कोचिंग दे सकते हैं 90 डे का, उसे 3 फेजेस बता सकते हैं, और उन्हें ये बता सकते हैं कि ये 3 फेजेस में हम 90 डेज को डिवाइड करेंगे और हम उनके साथ इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। Lovely. Got that. 3 phases. Okay, so let's dig in to the 3 phases because now I get to teach you skills. We're just going to review phase 1, and that was recorded, correct? So people can go back and listen to our previous session because यस, that whole session was on phase 1. And this jumpstart, this is the excitement phase. And this is where you do your 3 shakes, your 3 USANA NutriMill shakes a day for 3 meals a day, 2 healthy low glycemic snacks, and then your core essentials. And very basic, very simple. It's an entry point. Most people say they can do anything for 5 days. So we keep it very simple and structured in those 5 days. यस डेफिनेटली। सो डॉक्टर कैरन फेस 1 के बारे में बता रही हैं। फेस 1 ऑल्दो हमने कवर किया था, पिछला जो सेशन हुआ था जिसमें हमने 5 टेक लेंस के बारे में बात करी थी, तो वो सेशन हमारे पास रिकॉर्डेड है। इफ़ यू वांट आप मुझे बता दीजिएगा, आफ्टर द सेशन मैं आपको पर्सनली वो लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपने फेस 1 जो 1 to 5 डे वाला क्लेंस का टॉपिक था, जो आपने अगर मीटिंग नहीं अटेंड करी है या आपके माइंड में नहीं है, आप उसे रिकॉल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं पूरे सेशन को, तो आप आफ्टर दिस मीटिंग मुझसे लिंक ले सकते हैं लास्ट सेशन के, और फिर से गो थ्रू कर सकते हैं डे 1 to 5 का जो प्रोसेस जो लास्ट टाइम डॉक्टर कैरन ने शेयर किया था। और अगर मैं समराइज करूँ इस चीज़ को, तो समरी में यही था कि 5 डे किक स्टार्ट डे होते हैं। डे 1 to 5 में वो 3 शेक लेते हैं, योसाना शेक, न्यूट्रीमील ले सकते हैं, 3 शेक्स पर डे, जिसमें इसके अलावा वो 2 लो ग्लाइकेमिक हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं अपने डाइट में, और कोर एसेंशियल लेंगे 56 टैबलेट्स। सो Yes, and I think I have a picture. So this is what it would look like in India, right? These are your beautiful products. These are your meal replacement shakes, and these are the products you would order for your potential preferred customer. यस, सो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो हम 5 टेक लेंस में यूज करते हैं हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए। Yes. Okay. So here is some of the posts that during the 5 days, I'm not sure if I shared this on our last call, but every day, your job as the brand partner running the 5 days, or you might do it with share with Crossline, do it with a group of brand partners where you do it together. So every day you post what you're doing, because remember, we walk the talk. So this would be day 2 of a post. Now there is an app called Timestamp. It's a timestamp app where you take a photo in the app and it shows you the exact date
and time, so that you're really doing it. It's not you can't just take a photo from anywhere. You actually are really doing it, and can even put where you are posting from. So that's kind of a fun addition to this. It brings real excitement into each day of the program. This is the photo I showed before, where one of my preferred customers is posting what they're eating, all their snacks for the day, and these are the meals that they're going to have for the day. Sorry, I didn't get you. Can you just repeat the important points of this? The timestamp. This is Yes. a timestamp app. Yeah, It's you post your photo in the app, and then you post this on the WhatsApp group. So you ask all of your preferred customers doing reset to post their photos in the WhatsApp. Okay. Yes. So there's a cool app. एक app है. That's actually a very cool app. Do Yeah. you So know it? Do you know timestamp? no, I didn't know. That's why I asked you to repeat I'll that. put it in the chat. It's Okay. just because my accent might be a little different. So, oh, do you want me to put it to? I've just put it to you, but ओके टाइम स्टैम्प ऐप ओके सो एक एप्लीकेशन के बारे में बता रही है डॉक्टर कैरन टाइम स्टैम्प करके जिसमें आप जब भी कोई फ़ोटो अपलोड करोगे आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो आपको वो सारी डिटेल्स दे देता है किस टाइम पे आपने फ़ोटो लिया है लोकेशन क्या है तो मतलब आपको वो एक्यूरेसी बता रहा है ये एप्लीकेशन बेसिकली सो सॉरी oh, someone's talking. या नो प्रॉब्लम या Are we दैट good? वी कैन मूव फॉरवर्ड या Okay, good. Okay, so here's day 3. So this time, day 3, we're mixing it up a little bit. Now remember, this is about lifestyle. Here's the name of the app. See that? Timestamp. या So this one's timestamp, and as you can see, I did this group last week. So this is it's November the 5th last week, and it gives the time. So here we've got our Dutch chocolate Nutrimeal, which you have in India. We're putting raw cacao powder. So we're adding a little extra little excitement to it. Here's some cottage cheese as a snack, a salad, some nuts. Here's your supplements, and nice little, actually, I have one of these here. I love these Usana shaker bottles. These go really well to show on your WhatsApp of how you can put your shake and go. So, and then you put some kind of discussion here midway through the 5 days. The cravings are gone because of the satisfaction from my chocolate shake in the morning. I'm adding cacao powder to make it even darker version of chocolate. Give it a try. This is my brand partner that's running this group. And then you ask a question. What different variations on your shakes have you come up with? You ask for connection within the group. Okay, Dr. Karen, is this a picture of somebody from your team who Yes. shared? Okay, Yes. wonderful, wonderful. Yes. ओके सो डॉक्टर कैरन बता रही हैं कि ये बेसिकली डॉक्टर कैरन हमारे साथ फोटोज शेयर कर रही है उनके ग्रुप के उनके जहाँ पे उनके ब्रांड पार्टनर्स नए नए वेरिएशंस शेयर कर रहे हैं डाइट के डे 1 to 5 डे के क्लेंस में सो ये एक एक्सपीरियंस है अगेन जो उनके ब्रांड पार्टनर ने उनके ग्रुप में शेयर किया है 5 डे क्लेंस के दौरान जहाँ पे वो बता रही हैं कि मैं अपना शेक बना रही हूँ जिसमें मैं एक्स्ट्रा कोको पाउडर डाल रही हूँ और उसके साथ जो भी स्नैक वो कंज्यूम कर रही है विद द सप्लीमेंट्स वो सारी चीज़ उन्होंने एक पिक्चर क्लिक करी है बहुत अच्छे से और उन्होंने वो अपने ग्रुप में अपलोड करी है ताकि और लोग देख सके सो ये बहुत अच्छा आइडिया है इस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल भी कंसिस्टेंटली बिल्ड कर रही हैं और उसके साथ साथ वो लोगों को बता रही हैं बेसिकली कि वो ये सारा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रही हैं या Lovely. Okay. Okay, and then the last day, here's the final post of the day, of the week, where we've got our snacks again. There's the timestamp app. We're adding now you could add Precosa, you could add Coquinone, you could just sneak in another product, Usana product here that you might be taking, and you talk about it. In this case, we've got a Circulate Plus. It's not in India yet, but you can add some other product. So you are showing how you're integrating Usana products into your daily schedule. So this is just an example for you. It's very simple.
that when you do the 5 days, you do it as well, and you post these photos into the WhatsApp and encourage other people doing the group to post as well. वंडरफुल। सो ये एक और पिक्चर है जो डॉक्टर कैरन शेयर कर रही है उनकी ग्रुप का फोटो, जिसमें टाइम स्टैम्प ऐप में आप देख सकते हैं टाइम और डेट विजिबल है। डे 5 है ये, तो डे 5 का पोस्ट है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपके जो रेगुलर पोस्ट के साथ आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को उस पिक्चर में रख के उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। एक बहुत अच्छा अवेयरनेस पोस्ट क्रिएट हो जाएगा आपका, और एट द सेम टाइम लोग आपको देख रहे हैं, लोग चेक कर रहे हैं कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप अपनी लाइफस्टाइल में। एंड अगेन आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो, और लोगों को बिलीव हो रहा है कि आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग राइट। सो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रमोट करने का अपने प्रोडक्ट्स को, अपने लाइफस्टाइल को, और एट द सेम टाइम मेक श्योर करने का कि आप कंसिस्टेंटली अपनी ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड कर रहे हैं। Yes. And what I found is, as I've had people share these snacks every day, they start to build a habit to prepare their snacks before the day so that they stay consistent with that habit. It's very powerful. It sounds small, but it's a very powerful habit. It really is. एब्सोल्युटली। And then every day we have an assignment. So in this case, the daily assignment was post any other supplements you're taking through the timestamp photo. Tell us how you're feeling, any positive changes you've noticed, and a little quiz. Now, remember, this is the last day. Did you learn anything new from this 5-day reset? Share 1 or 2 things that really stood out for you. So you're asking at the end of 5 days for people to engage and share their experiences. And people do love to share their experiences when you ask them. एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर कैरन बता रही हैं कि वो अपने सेशंस, वो एवरीडे जो उनका 5 डे क्लेंज है, तो हर रोज़ वो उन्हें एक डेली असाइनमेंट देती है, जिसमें डे 5 का असाइनमेंट वो शेयर कर रही है हमारे साथ, कि डे 5 का डेली असाइनमेंट में ये था कि उन्होंने अगर कोई और प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स ट्राई करे हैं योसाना के, तो वो उसे ले, उनका फ़ोटो ले टाइम स्टैम्प ऐप के थ्रू, और वो बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब उन्होंने वो प्रोडक्ट्स रेगुलरली कंज्यूम करे। उसके साथ साथ कोई पॉजिटिव चेंजेस हैं जो उन्होंने अपने लाइफ में पिछले 5 दिनों में विजिबली देखे हैं। सो ये उनका असाइनमेंट था। उसके साथ एक छोटा सा क्विज भी था जो उन्होंने शेयर किया है, ठीक है, कि आप 1 से 2 चीज़ें बताइए जो आपके लिए बहुत डिफरेंट थी, जो आपके लिए बहुत अच्छी रही, स्टूड आउट, थिंग्स विच स्टूड आउट बेसिकली, जो जिसको लेकर के आपको लगा कि अरे ये बहुत अच्छा था, ये तो मुझे कंटिन्यू करना है। सो अगर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट था तो वो आप बताइए। तो इससे एंगेजमेंट बिल्ड हो रहा है, इससे उनके लोग एवरीडे बेसिस पे वो हैबिट क्रिएट कर जो उनकी क्रिएट हो रही है वो शेयर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, आपको एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा लोगों का। अगर उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं तो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा जो आपको शेयर करेंगे वो, और इससे आप बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल्स भी बिल्ड कर सकते हैं। That's it. Lovely. You do such a great job. And then remember, okay, so now we're moving into phase 2. You want to have people get excited. The 5 days has ended, but now we're on phase 2. And phase 2, you start to people share their before and after photos, and they do. They do share before and after photos with the timestamp and testimonials. How much weight did they lose? How did you feel? Changes in your skin. Remember, what we do on the inside shows on the outside, and people comment about how their skin just glows. And then you can start talking about the skincare products, because in the first 5 days, they're so focused on getting through the 5 days. They don't really, it's not a good idea to flood them with too much products. But phase 2 is when you start to introduce some more products and your personal goal after reset. So you engage them. यस, ओके। सो अब हम फेज 2 की बात कर रहे हैं। डे 1 to 5 में हम बहुत ज़्यादा बम्बार्ड नहीं करते हैं क्वेश्चंस के साथ या बहुत सारे असाइनमेंट्स के साथ। डे 1 to 5 इज़ ईजी। सो अब डे 6 to डे 28 में आप ये कर सकते हैं कि आप जब उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं उस आने वाले टाइम के असाइनमेंट के लिए, सो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप उनसे पूछें कि उनका स्केल का मेजरमेंट क्या है, पहले का और अभी का क्या चेंजेस हैं जो उन्होंने अपने वेइंग स्केल पे देखे हैं, अपने वेट में देखे हैं।
सेकंड, आप उनसे बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर भी ले सकते हैं, और लोग देते हैं अपनी बिफोर आफ्टर के पिक्चर। आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप टाइम स्टैम्प के साथ अपनी बिफोर आफ्टर के पिक्चर शेयर करें। थर्ड, आप उनसे उनकी टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, जिसमें वो बताएंगे आपको कि उन्होंने अपना कितना वेट लॉस किया रीसेट के टाइम पे, या वो कैसा महसूस कर रहे हैं रीसेट करने के बाद, 1 to 5 डे की रीसेट करने के बाद। कुछ चेंजेस हैं जो उन्होंने अपने स्किन कंडीशन में देखे हैं, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को अच्छा नरिश कर रहे हो, फीड कर रहे हो, जब आप अच्छा कंज्यूम कर रहे हो, जो आप डाल रहे हो वो आपको बाहर दिखता है। सो आप जब अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो आपकी स्किन कंडीशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आप लोग महसूस करेंगे वो चेंजेस अपनी स्किन में। तो आप उनसे उनका स्किन का कंडीशन पूछ सकते हैं, और आप उन्होंने क्या एंजॉय किया इस पूरे प्लान के, इस पूरे रीसेट के दौरान उन्होंने क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी, आप वो पूछ सकते हैं। और इस टाइम पे उन्हें आप नए प्रोडक्ट्स के साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इनिशियली, क्योंकि डे 1 to 5 में लोग इजी गोइंग रहते हैं, तो उस समय हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस या बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ उन्हें बॉम्बार्ड नहीं करना चाहिए। सो आप आफ्टर 6 डेज के फेज 2 में बेसिकली आप उन्हें नए प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनका डेली फेवरेट असाइनमेंट क्या था, आप उनसे ये पूछ सकते हैं। और उनका पर्सनल गोल क्या है रीसेट को लेकर के, आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं। Yes, thank you. Beautifully said. Very well done. Okay, so let's dig in a little bit more about phase 2, the results and reinforcement days. There's so much you can do in this phase. Start to introduce, maybe you do a spa party with the skincare products. There's just so many additional things you can do while you are focused on this lifestyle shift. So I recommend after the 5 days that people continue with 2 shakes a day. I call it the transform phase. 2 shakes a day and 2 healthy, clean snacks and 1 low glycemic, healthy, clean meal. That means just a healthy protein and healthy vegetables. And then, of course, the core essentials, because they're going to have a month's supply of core essentials when they start with the 5 days. So this is what I recommend the protocol is for the day 6 to 28, while you start introducing some other products. ओके, ओके। सो अब हम फेज 2 की बात कर रहे हैं। फेज 1 में डे 1 to 5 था, जिसमें हम 3 शेक्स अ डे और 2 लो ग्लाइसेमिक हेल्दी क्लीन स्नैक्स ले रहे थे, और उसके साथ कोर एसेंशियल कंज्यूम कर रहे थे। सो अब हम डे 6 to 28 की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी देख रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम और ऐड ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 2 शेक्स अ डे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस रहेगा। सो 2 शेक्स अ डे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप 2 लो ग्लाइसेमिक हेल्दी क्लीन स्नैक्स, जैसे हमने पीछे फोटोज में देखा, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक हेल्दी लो ग्लाइसेमिक क्लीन मील, एक नॉर्मल मील आप ले सकते हैं, हेल्दी मील आप ऑप्ट करें, जिसमें आप प्रोटीन ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, और उसके साथ साथ कोर एसेंशियल ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास 1 महीने की सप्लाई होगी कोर एसेंशियल की, तो हम उसे रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। बट इसके साथ साथ आप और प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन फेस में। आप अपना भी अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डे 1 to 5 आपने किया है, तो 6 to 28 में आप अपना भी एक माइंडसेट शिफ्ट, अपना लाइफस्टाइल शिफ्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। And one of the reasons, beautifully said, one of the reasons we can now start talking about other products is we've built trust, trust with a capital T. You've spent a lot of time in those 5 days building trust, building belief. Now we can start talking about other products. So in phase 3, and you did a really good job. I'm going to actually skip to a slide here that I got from your, I don't think I'm going to get time to this one. Okay. This is a powerful slide. I think you might have even made this slide. Did you make this slide? Someone in India made this slide. Yes, yes. We have a marketing team in here in India. They made this. They are doing So an absolutely amazing job. I am so in awe of your marketing materials on social media that I wish we don't have these in the United States as beautiful as you do. So use them. This is exactly what we're talking about
in terms of stepping into integrating more products. So I love this. You start with a morning stretch, a yoga class, some movement, and then you have your, of course, we're going to be doing our NutriMeal, and you've added Copra Prime, which I love, Copra Prime. Now, this is where you can get very flexible in what you recommend. This product, I'm going to make it bigger in case anyone, It's well, coconut. we call it Copra Prime. You call it Coquinone 100. Coconut 100. Coquinone 100. Coquinone is the spark plug of the body. This is Copra Prime down here. Coquinone, we have, it's this coenzyme, I'm not going to get too technical, but coenzyme Q10 is It's the an same. enzyme in our body that's like a spark plug of our body. Spark plug. And that's what this is. It's a spark plug that gives spark to every cell in the body. So I love that you have said, okay, 8:30, we're going to add Coquinone 100. But you want to explain to people what that is. But I think that's the perfect addition to your morning routine. And then your midday pickup, and you've even got here adding Fiber G. So this is a beautiful visual of integrating some USANA products. They don't have to do all of them, but maybe they could say, hey, which one would you like? And you get a chance to explain. Oh, you get a chance to explain. Oh, where did that go? Let me go back to that. This is one of my favorite slides you've made. You get a chance to explain what all these products are. This one, I'm going to make this is the Copra Prime for our brain. This is Fiber G for added food for our microbiome, for our gut health. This is Precosa for great joint health. So, and you see, I just use very simple words explaining these. And I might say to my client, which one do you want to add for the 6 to 28 days? Let's add one product. Which of these do you think excites you? And so you add that one. But you've got it laid out here so that they know there's all these other ones coming, but we're just going to start with one now. Or some people might say, oh, I want them all, but you're personalizing the experience there. Absolutely wonderful. So with this slide, डॉक्टर कैरन एक्सप्लेन कर रही है कि जब आप नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनके साथ इस तरीके से एक रूटीन शेयर कर सकते हैं जो हमारे सोशल्स पे ऑलरेडी डला हुआ है। हमारी मार्केटिंग टीम ने आपको एक बहुत अच्छा मेन्यू डिज़ाइन करके दिया, एक प्लानर डिज़ाइन करके दिया है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आप उन्हें आप आपके लोगों को, आपके क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं इस तरीके से कि आप ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोकेनॉन के बारे में मेंशन्ड है 8:30 AM मॉर्निंग जब आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसके साथ साथ आप कोकेनॉन ऐड करें। कोकेनॉन के बारे में डॉक्टर कैरन ने बताया, वंडरफुली सेड दैट इट एक्ट्स लाइक अ स्पार्क प्लग जो आपके पूरे सेल्स को एक वो स्पार्क देने का काम करता है आपकी बॉडी में। सो वो आपको एनर्जाइज करता है एंड दिस विल गो परफेक्ट जब आप अपना दिन की शुरुआत कर रहे हैं उस टाइम पे। सो आप इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें बता सकते हैं। आप कोपा प्राइम के बारे में बता सकते हैं उन्हें, फाइबर जी के बारे में बता सकते हैं, प्रोकोसा के बारे में। सो ये आप उन्हें शेयर करें कि आप ये भी अपने रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। आप उन्हें नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें और हो सकता है इनमें से कुछ लोग एक ही प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे उस टाइम पे, या हो सकता है कि कुछ चाहेंगे कि आप सारे प्रोडक्ट्स दे दो उन्हें, बट आप उन्हें एक पर्सनलाइज अप्रोच दें जिससे वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस देख सके और इससे डेफिनेटली आपके ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट लॉयल्टी भी बिल्ड होगी। Yes, beautiful. And remember, we've already built trust with the 5 days. Yes. So now we can start expanding from that. And this image is so fabulous. I just love it. And then you've also created images to explain these beautiful products. So I just am so impressed with how you are creating these images for brand partners. So I hope everybody is using those. If you're listening to this webinar right now and you're on the chat, please tell me, have you seen these? Are you using these? Because they are beautiful. This Precosa for helping our joint health. And then this one talks about Precosa for optimal joint health, for the NutriMeals that helps you feel fuller longer,
and the core essentials. So another way to round it out, to feel strong from the inside out. I just love these images, and pictures speak 1,000 words. So please use these images. डेफिनेटली थैंक यू सो मच डॉक्टर कैरन फॉर हाईलाइटिंग दिस सो हमारे साथ जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं डॉक्टर कैरन बोल रही हैं कि आप इन पिक्चर्स को यूज़ करें आप हमारे सोशल्स पे जाएं इन फोटोज़ को डाउनलोड करें स्क्रीनशॉट लें और अपने लोगों के साथ शेयर करें इन्हें यूज़ करें क्योंकि ये बहुत अच्छा अगेन आप जो बोल के बताएंगे उससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस ये फोटोज़ कर रही हैं सो आप हमारे ब्रांडिंग मटेरियल को यूज़ करें फुल्ली अपने लोगों को दिखाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू इम्पोर्टेंस Yes. लेट्स मूव फॉरवर्ड And of course, your picture with these also helps. I mean, don't just use these pictures, but let these create interest. I mean, they're so colorful, they catch the eye, they're simple, the way the products are explained. Here's the Magna-Cal D difference, because a lot of people ask about magnesium, calcium, vitamin D, and this is laid out so beautifully. And this is why your body needs this trio. You put these on your WhatsApp group as you're running your 90-day group, and you also share why you feel you've benefited from these. यस डेफिनेटली सो अगेन आप अपने आपने अगर कोई ग्रुप बनाया है 90 डेज एक्सपीरियंस वाला तो आप अपने ग्रुप्स में ये फोटोज शेयर कर सकते हैं ये ब्रांडिंग मटेरियल शेयर कर सकते हैं या आप अपने व्हाट्सएप पे अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आप जहाँ चाहें आप वहाँ अपना रूटीन दिखाते हुए इन पिक्चर्स को प्रमोट कर सकते हैं आप अपने फोटोज भी अटैच कर सकते हैं इसमें आपके फोटोज के साथ भी ये बहुत अच्छे जाएंगे और आप चाहें तो आप सिर्फ ऐसे ही इन पिक्चर्स को एज अ सिंबल एक्सप्लेन करते हुए प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए भी शेयर कर सकते हैं जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीकैल डी का दिया हुआ है कि कैसे मैग्नीशियम कैल्शियम और विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को वो एक्सप्लेन करते हुए ये जो पिक्चर है आप इसे डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं अपने सोशल्स के ऊपर Beautiful, just beautiful. Okay, so of course, you want to be sharing your 90-day success stories now in phase 2 and phase 3. So this is, and I share my story. I'm very transparent that this was me in 2005, and this was me this year on one of my little grandbabies. And this is a lifestyle that I'm always going to follow. And people, they will follow you because you are walking the talk. You build trust and belief and integrity and honesty and authenticity. These are very important qualities that people are looking for. A lot of other companies, they just throw products at you, but there's no person behind the products. Bring yourself to your stories. And this is a beautiful lady, I think I shared last time, I helped her get ready for her daughter's wedding. And it was such a beautiful gift that I could help her with that. And of course, she looked fabulous. she absolutely does Yes. सो आफ्टर फेज 2 एंड फेज 3 आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 90 डेज की स्टोरी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करें जहाँ पे डॉक्टर कैरन अपनी स्टोरी शेयर करें कि वो 2005 में कैसी थी और 2025 में वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बैठी है एंड दिस इज द लाइफ स्टाइल दैट शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन था जो कंसिस्टेंसी के साथ हुआ जब कंसिस्टेंसी मीट्स बिलीव दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस और ऐसे आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पे जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं जब आप अपनी पिक्चर शेयर कर रहे हैं जब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं आप बेसिकली उन्हें ये बता रहे हैं कि आपने एक इंटेग्रिटी बिल्ड करी आपने एक ऑनेस्टी के साथ उन्हें अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी सो यहाँ पे लोगों के अंदर आप ऑनेस्टी बिल्ड होगी ट्रस्ट बिल्ड होगा वो आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सिबल समझेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट वो देख रहे हैं जो लाइफस्टाइल शिफ्ट वो देखना चाह रहे हैं आपके साथ वो डेफिनेटली चलना चाहेंगे सो इस तरीके से आप अपने बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं आपके क्लाइंट्स के बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प It does. And I've got some other pictures here. I think I'm going to go back because I realized, boy, we never have enough time on these calls. So this picture here. Now, you also want to share
your transformation stories with each other. So these three are my clients, but this is someone from a cross line. So you could make sure within your USANA family, you're sharing each other's transformation stories and photos, so that with permission, you can use those in your groups too. So they're just so powerful to see people's photos, and that builds this belief and also a commitment to this longer 90-day process. यस एब्सोल्युटली सो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो डॉक्टर कैरन अपनी टीम की तो शेयर कर रही हैं बट अपनी क्रॉस लाइन की भी शेयर कर रही हैं सो इस तरीके से हम भी हमारे साथ आपने अगर किसी को देखा जिन्हें ये रिजल्ट्स मिले हैं आप उनका बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने लोगों के साथ आप एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है बेसिकली जो आप डेफिनेटली आगे शेयर कर सकते हैं एंड दिस विल हेल्प बिल्ड ट्रस्ट ये ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेगा आपकी Yes, thank you. Okay, so I'm going to go back because I wanted to, I think I covered that. Oh, don't forget this one. This is another beautiful image. I love talking about gut health. It's my favorite topic to talk about gut health. And this Fiber G product, I think people do not understand enough. And I really want you all out there to really support this with your messaging. Fiber is fertilizer for the gut microbiome. So the gut needs fiber to work properly. And each of the shakes has 8 grams of fiber, but this Fiber G Active gives extra fiber to help the gut move. It feeds the good bacteria. I've actually put my own, well, no, I think I pulled this from, it's compliant. So it feeds the good gut bacteria. You don't have to use the word microbiome, just talk about feeds the good gut bacteria, keeps you feeling light and regular, because good days start with good digestion. Really, in this phase 2 and 3, really talk about gut health, because when you can improve someone's gut health, you're improving their entire body. I don't know that I've done a webinar for you about gut health, but that would be a really good whole hour topic about how to talk about a healthy gut. And this is a product. It's one of the premium products that I think doesn't get talked about enough. यस डेफिनेटली सो लास्टली डॉक्टर कैरन एक और प्रमोशन मटेरियल जो हमारे सोशल पे है फाइबर जी को लेकर के वो शेयर कर रही हैं जहाँ पे शी टॉक्स अबाउट फाइबर कैसे काम करता है एंड डॉक्टर कैरन वन ऑफ द easiest explanation that I have personally ever heard about fiber G that is it works like a fertilizer सो डॉक्टर कैरन बता रही है कि फाइबर जी को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फर्टिलाइजर की तरह काम करता है आपके गट बैक्टीरियाज में जो आपके जो गुड माइक्रोबायोम्स हैं उसके लिए ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर फूड की तरह काम करता है सो अगेन इस तरीके से आप फाइबर जी को आगे प्रमोट कर सकते हैं एंड लेटर ऑन वी वुड लव यू टू टॉक अबाउट गट हेल्थ मोर एंड मोर My favorite topic. I love talking about gut health. And it is something, now you have Fiber G, you have the Core Essentials, you have the Nutrimeal, you have a lot of products that can be integrated into a gut health program. So let me see, I have to just go back here so that I want to cover here. Okay, so I see we never have enough time. So after listening to phase 1, phase 2, and phase 3, I want you, like I said last time in a call to action, is call it a 90-day challenge so that you get the mindset set straight out. It's a 90-day challenge. It starts with the 5 days, but it's a 90-day challenge. Experience transformation through simple, consistent habits. These are words I found are very effective because it makes it very doable. It's not about hard work. It's simple, consistent habits. एब्सोल्युटली सो एट लास्ट जब आप लोगों को बता रहे हैं इसके बारे में तो आप सिर्फ
5 डे क्लेंस के बारे में मत बात करिए, आप उन्हें 90 डे चैलेंज के बारे में बताइए, जहाँ पे फेस 1 रहेगा, 1 to 5 डे का चैलेंज जो रहेगा, 5 डे क्लेंस एक फेस रहेगा, बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड कर सकते हैं सिंपल कंसिस्टेंट हैबिट्स के साथ, जिसमें वो बहुत सिंपल और बहुत कंसिस्टेंट हैबिट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ ही वो अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट देख सकते हैं इन नेक्स्ट 90 डेज। सो इस तरीके से कॉल टू एक्शन लीजिए, आप लोगों को इनवाइट करिए, लोगों को बताइए 90 डेज के बारे में, 90 डेज चैलेंज के बारे में बताइए, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड प्रोडक्ट लॉयल्टी, राइट? It sure is. So loyal customers become advocates of the product. It's like, look at me. People see, what are you doing? They become an advocate, and then advocates attract others, and that's how momentum builds. I call it the business ripple effect. यस, वंडरफुल। सो आप नोटिस करेंगे कि जो 90 डेज में आपके साथ जो लोग कंसिस्टेंट हैं, वो खुद ब्रांड पार्टनर्स क्रिएट हो जाएंगे, वो ब्रांड एडवोकेसी स्टार्ट करेंगे, एंड दे विल वर्क विथ यू, वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, और इससे हम बोलेंगे बिजनेस रिपल इफेक्ट, क्योंकि लॉयल कस्टमर्स आपके एडवोकेट्स बनेंगे, और एडवोकेट्स और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इससे आपके बिजनेस में, आपके काम में एक मोमेंटम बिल्ड होगा, जहाँ पे आपके पास ऐसे लीडर्स हैं, आप खुद तो लीडर हैं ही, बट आप अपने साथ और लीडर्स बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लॉयल, दे हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, दे हैव ट्राइड, टेस्टेड, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। सो इससे बहुत अच्छा आपका, आप ऑब्वियसली आप अपना बिजनेस तो बिल्ड कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली। That's right. And you are your best advertisement. So I have people see me at the gym, I'm working out, and they say, well, what do you do? How do you get to do what you do? And so that gives me an opening to say, well, let's talk about that. Yes. I Yes. cannot encourage that enough. थैंक यू सो मच डॉक्टर कैरन। एंड एट लास्ट डॉक्टर कैरन बता रही है कि आप अपनी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट है, जब वो जिम जाती है और वो एक्सरसाइज परफॉर्म करती है, तो लोग उनसे पूछते हैं कि हाउ आर यू डूइंग इट, आप कैसे कर रही हो ये चीज़ें, तो वो बताती हैं उन्हें कि लेट चलो इस बारे में बात करते हैं, एंड शी टॉक्स अबाउट द ट्रेनिंग दैट वी हैव डन। अभी जो डॉक्टर कैरन ने बताया, वो युसाना के बारे में बताती हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं, और इस तरीके से वो एक लाइफस्टाइल जो उन्होंने पर्सनली डेवलप करी है, अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, दैट्स हाउ आई गेस यू आल्सो बिल्ड ट्रस्ट। That's right. That's how I do it. And I say, hey, I go home, I have my shake and I have my supplements, and every night I take my Hepasil. Like, I just tell people what I do, and they say, okay, I just want to do that. So वंडरफुल, वंडरफुल। सो इसी तरीके से डॉक्टर कैरन उन्हें बताती है कि वो क्या प्रोडक्ट्स ले रही हैं, कौन सा शेक ले रही हैं, हेपासिल ले रही हैं वो रात को डिनर के बाद। सो ये सारी चीज़ें वो शेयर करती है लोगों के साथ, एंड यहाँ से लोग उनके साथ और आना चाहते हैं, वो भी ट्राई करना चाहते हैं जो वो कर रही हैं, एंड अब ऑब्वियसली दे आर थ्राइविंग एज वेल। सो या yes, well, and thank you everyone for staying. I went over a little bit today. I know it's late over there, but there'll be more to come. And I hope every time, the most important thing is you take something away and you take action. Yes, definitely. Thank you so much, Dr. Karen. And we'll definitely wish you to come up with gut training again. Okay, I can do that. I would After, love to. yes, definitely. Thank you so much for this wonderful session. Everybody loved your session. And can we take some questions if you have time? Yeah, yes. ओके। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ले सकते हैं, तो अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं सेशन से, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी डॉक्टर कैरन के साथ मिलके उन्हें आंसर करने का। Can you hear? I have some background noise. Can you hear that or not? नो, No? Okay, good. नो। Sometimes they're good. ओके, Go ahead. या। So are you going to व्हाट ask इज the द question? बेस्ट टाइम टू ईट फाइबर जी? Uh, you have to be careful with fiber G being fertilizer. We all know that's fertilizer for the gut bugs. Go slowly, because too much can give you gas. So I would put it a little bit extra in your shake, like maybe half a teaspoon.
and go very gently. So there's no best time, but remember, you will probably have a bowel motion after fiber G. So it's probably better earlier in the day. Okay. So ideally, we can try this in the daytime, right? Ideally, we should consume fiber G in the daytime. Yes, Yeah. early in the day, early. Early in the day. Okay. Yes. So I guess Deep, this is your question. So you can आप शायद 12-1 बजे के आसपास early in the day you can start your day with fiber G. Yes. You can also just put it with water and take fiber G. Sometimes people, if you take a little teaspoon of fiber G and put it in water and drink it before a meal, you're not going to eat as much because you're going to feel fuller. ओके ओके सो आप चाहें तो आप अपनी मील के पहले भी 1 स्पून पानी में मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं बट फिर आप वो एक अच्छा दैट आई गेस दैट विल बी कन्वीनियंट वी कैन इफ यू बी ईटिंग लेस इट विल डेफिनेटली हेल्प विद द वेट लॉस एज वेल वेट मैनेजमेंट एज वेल राइट Yes. या सो आप अपने मील्स के पहले भी ले सकते हैं आप अपनी मील के पहले 1 स्पून फाइबर जी पानी में मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आप नॉर्मली आप थोड़ा ज़्यादा फुल महसूस करेंगे तो आप जितना खाते हैं नॉर्मली आप उससे थोड़ा कम फूड कंज्यूम करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू वो आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा आपको ओके Let's see. I see some questions in the Q&A. Hepasil should be taken after dinner. No, it doesn't matter. You should take Hepasil when you remember to take it. I take it at nighttime. I take it Yeah. at nighttime. The best Okay. times to take it. If someone is having a loose motion occasionally, can they take fiber G? Yes, they can. And then someone else asked if I can share this slide again, and then I'll have to go. Let's see, share my screen here. Here we go. I think someone asked me to share the 3 phases. Yeah. Yeah. Hopefully that helps. Just looking at, okay, I can't answer any questions about, someone's asking about kidney levels. Oh, I'm taking in an empty stomach and it works amazing. Oh, I think someone is talking about fiber G on an empty stomach. Yeah. Fiber G on empty stomach. You feel very full. Yes. All right, well, I'll have to jump off because I have another call straight away. So Okay. thank No you for problem. staying a little later today. We got a few questions answered. Thank you so much, Dr. Karen, for this amazing session. We are Yes. looking forward to see you again. Yes, me Thanks a too. lot. All right, bye everyone. Bye, Bye. everyone. Bye, Dr. Karen. Thank you so much.